Welcome to the Department of Pharmacy. A PharmD or D Pharmacy is a 5-year-long professional course in which you study pharmaceutical sciences. It enables you to practice pharmacy in the healthcare, including drugstores and hospitals. In KAIMS International Institute, candidates with a FSC pre-medical background who meet the eligibility criteria can pursue this degree. D Pharmacy in Pakistan has been approved by the Higher Education Commission. The degree is recognized by the Pharmacy Council of Pakistan. In addition, it is also acknowledged globally. Welcome to Department of Pharmacy, KAIMS International. I am Dr. Rabia Razak, Head of Department of Pharmacy. Here, students not only gain knowledge but also develop their skills. So, come join the KAIMS International today and explore your future prospects. Let's talk about PharmD today. PharmD or Doctor in Pharmacy is a popular doctorate degree one can pursue in Pakistan. As a PharmD graduate, you can expect to work as pharmacist in hospitals, clinics and retail pharmacies. You can also work in drug regulations and quality control. You can work in universities and can provide consultancies as well. So KAIMS International Institute is providing quality education and creative atmosphere to promote this profession. So what are you waiting for? Let's get your admission secure in this prestigious institute. Because of the rise of the healthcare and pharmaceutical industry, the demand for qualified pharmacy expert has surged in recent years. For students who are thinking about a rewarding career in the pharmaceutical industry, this is the perfect time to get admission in KAIMS International Institute. The scope of pharmacists has expanded, and there are more doctors of pharmacy working in healthcare services now than ever before. Why? This is due to their greater involvement in the administration of medication to patients of all ages and working in different positions. KAIMS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ने एक्सटर्नल एवेल्युएशन के नाम से एक एक्टिविटी कंडक्ट जिसका पर्पस ये था कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जा सके कि वो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं वो असेस कर सकें कि बच्चा किस स्टैंडर्ड के ऊपर मौजूद है। हम इनिशिएटर्स हैं इस एक्टिविटी के और साथ ही साथ हम इस तरह की और भी एक्टिविटीज ऐड अप करते जाएंगे और हमारा मीडिया सेल इंशाल्लाह आपके साथ इसी हवाले से राब्ते में रहेगा। थैंक यू। I am thankful our Department of Pharmacy, our HOD Dr. Rabia Razak, all the faculty members, especially Dr. Usman Saab, take this initiative for the students. ज़्यादातर जब student final exam में वाइवा में जाते थे तो बहुत ज़्यादा hesitate होते थे, तो इन्होंने final exam से पहले ही external evaluation का जो trend set किया है market में और first time in Multan, तो I especially thank to my pharmacy department as well and I hope कि ये trend इंशाल्लाह चलता रहेगा। इससे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा confidence भी आएगा, एक बच्चे को एक पता भी चलेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम लैक कर रहे हैं अपने फाइनल वाइवा में। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ गुड ट्रेंड ताकि बच्चा अपने आप को evaluate कर सके और जब फाइनली किसी एग्जाम में जाता है उसके लिए बहुत आसानी होती है, वो हेजिटेशन भी खत्म हो चुकी होती है। फार्मेसी डिपार्टमेंट की टीम है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट डे एंड नाइट टू evaluate to set the new trends for the students as well as the pharmacy profession. I am very thankful.